The Congress and other INDI members held nationwide protests against the murder of democracy. They hit the streets against the suspension of close to 150 MPs from the Lok Sabha and the Rajya Sabha over the last 2 weeks over the parliament security breach. As the parties joined hands, the overarching theme was a joint fight against fascism and an attempt to save the last vestiges of democracy and freedom. Listen in. देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब एक होकर लड़ रहे हैं। ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में लड़ाई है। जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जो व्यक्ति और जो निजाम अभी सत्ता में है, उसे विपक्ष मुक्त संसद चाहिए, प्रतिरोध मुक्त सड़क चाहिए, खिलाड़ी मुक्त खेल चाहिए। You are making parliament redundant. If parliament becomes redundant, democracy dies, democracy is killed. This is what Mr. Modi and his government are doing. जनतंत्र को बचाना है, हमारे संविधान को बचाना है, तो ये अनिवार्य है कि आज जो सरकार में है, आज ये भाजपा की जो सरकार है, इस भाजपा को सत्ता से और सरकार से दूर रखना अनिवार्य है। Now, leading the charge against the centre was Congress MP Rahul Gandhi, who directly targeted the Prime Minister. He said that this major security breach is not just a failure of the Modi government, but also proof that the centre had not been able to deliver on the promise to provide employment to youth. And that is what ultimately led to the security breach. He also said that he has conducted a survey among the youth of the country, and that showed 7 hours were spent by the youth on their phone, on Instagram, on social media. Why? Because none of them had a job. 2-3 युवा जंप करके अंदर आ गए। जंप करते हुए हम सब ने देखा। अंदर आए, थोड़ा धुआं फैलाया, बीजेपी के सांसद सब भाग लिए। वो अलग बात है। वो अलग बात है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। वो टीवी पे आपको नहीं दिखा, वो हमें दिख रहा था पीछे से। नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया है। रोजगार उससे छीन लिया है और उसको एक ही रास्ता दिया है, सेल फोन पर इंस्टाग्राम को मतलब देखते रहो, 24 घंटा देखते रहो। ये है हिंदुस्तान की हालत, सच्ची हालत। इसीलिए ये जो युवा थे जिन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच जरूर की, वो भी आपकी गलती है। इसलिए वो पार्लियामेंट हाउस में कूद कर आए। Now, the BJP, on the other hand, went on the offensive. Earlier, remember, the Prime Minister in a meeting of the parliamentary party had questioned whether there is a tacit support to those who intruded inside Parliament. Today, Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi in fact reiterated that charge and even hinted that perhaps what has happened inside Parliament, the intrusion, the effort at trying to release a smoke bomb inside, was all a part of a well-thought-out conspiracy. Rahul Gandhi doesn't understand what he is speaking. Somebody will guide him, somebody will write and give it to him, and वो पढ़ते हैं, ये problem है. So in a way they have supported the people who doesn't believe in the Constitution of India, people who believe in the constitutional institution of India,
इन लोगों को सपोर्ट करते हुए ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग को पहले सपोर्ट किए थे। हम तो सस्पेंड करना नहीं चाहते थे, टू बी वेरी वेरी फर्म, वी रिक्वेस्टेड देम लाइक एनीथिंग, बट मेनी एमपीज, कुछ लोगों को हमने सस्पेंड किया शुरुआत के दिन में। बाद में सब लोग आके रिक्वेस्ट करना शुरू किया, हमको बाहर जाना है, हमको सस्पेंड करो करके। ये कांग्रेस पार्टी का लेवल है। और अभी कर्नाटक में जो नया सरकार सिद्धरामैया जी के नेतृत्व में नया सरकार कार्यभार संभालने के शुरू करने के बाद एक व्यक्ति 1 घंटा से ज्यादा, मोर देन 1 आवर, ही सैट इन दी असेंबली सेशन, तब तक पता ही नहीं चला। तो इसलिए ये जो घटना है ये गंभीर घटना है, ऐसे सरकार भी मानते हैं और इसलिए पूरा इसका जांच चल रहा है। इंडी अलायंस is creating north and south divide, creating the cultural divide. After the elections in these 3 states, we have seen the morale of the Indy alliance have gone down. Unfortunately, the members of the opposition parties, this Indy alliance, did not come together. Senior leader of Congress party was making the video. It seemed that he is unemployed. As of today, the direct fight is between a united opposition which has taken up the theme of a muzzling of any kind of dissent, that there is a security breach, that whenever somebody tries to question it, they are thrown out of the house. And on the other side, the BJP, which is saying that this is not a coincidence, the attack itself and perhaps the reaction afterwards, all of it is well thought out, all of it is to a plan. It is a strategy to corner the government, and in fact, the government is not an offender, but a victim. This is the political positioning, and make no mistake, it is directed at the voter in the run-up to 2024, but at the end of a fractious winter session of Parliament, who is really going to be able to convince the voter about who is responsible for the attack on Parliament?